Hello everyone, a warm welcome to our YouTube channel CA Sansar. I am Nandita Nangia from CA Sansar and today we will discuss about the latest Supreme Court judgment on dishonour of checks. And for that, we have with us CA Vivek Khurana ji. Good morning sir. First of all, many returns of the day and thank you very much for giving your valuable time on your birthday. So sir, can you please guide us on the latest Supreme Court judgment on dishonour of checks? Thank you very much, Nandita ji, for such a warm welcome and your birthday wishes. And my sincere thanks to CA Sansar team for inviting me again on this platform. And today, as you ask for the latest Supreme Court judgment, so let me show you through the PPT. Yes, this PPT is visible. Yes sir. Okay, so recently Supreme Court landmark judgment on the dishonor of check and the offense under Section 138 of the Negotiable Instrument Act, and this was in the Dashrath bhai Trikam bhai Patel versus Hitesh Mahendra bhai Patel, and this judgment by the Honorable Judge DYC Chandrachud and HIMA KOHLI, and Mr. Chandrachud, Honorable Judge, will be our next Chief Justice of India on the Supreme Court. And in this judgment, this Honorable Supreme Court had said no offense for dishonor of check under Section 138 of the Negotiable Instrument Act is made out if the check is presented for the full amount without endorsing the part payment made by the borrower after the issuance of the check. So this is very important. You can see that the landmark judgment. अभी तक क्या हो रहा था कि चेक बाउंस हो गया, वी कैन गो इनटू द सेक्शन 138, देयर आर द ऑफेंस. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द सेक्शन 138 और उसके बाद इस जजमेंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे व्हाट वुड बी द इफेक्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. तो 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, it talks about where any check, this is only about the check drawn by a person. Here the word is person. एक word देखना आप नंदिता जी. Where any check drawn by a person on account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to other person from out of the account of for the discharge in whole or part of any debt or any liability. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेटर लाइबिलिटी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेटर लाइबिलिटी. सो अगर कोई इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, कोई चेक इश्यू किया किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को in whether it's a whole or the part for the discharge of any debt or the liability, and this is for any reason because of the amount standing to the credit of the account is insufficient to honor the check, or that it exceeds the amount arranged to be paid from the account by an agreement made with the bank, such person shall be deemed to have committed an offense. So here the word is deemed to have committed an offense, and shall, without prejudice to any other provision of this act, be punished with an imprisonment for a term which may be extended to 2 years, or with fine which may be extended to the twice of the amount of the check, or with the both. तो सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इट टॉक्स अबाउट कि अगर कोई चेक इशू किया है इन पेमेंट ऑफ वेदर इट्स द फुल और द पार्ट एनी इन द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और द लायबिलिटी, और चेक अगर बाउंस हो जाता है, रिटर्न आ जाता है बाय द बैंक इनसफिशिएंट फंड उस रीजंस में, तो देन पर्सन शैल बी डीम टू कमिट एन ऑफेंस. तो क्या उस केस में ऑफेंस में आपकी क्या पनिशमेंट है? 2 years मैक्सिमम, और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और द बोथ. बट उसमें प्रोवाइडेड भी है नथिंग कंटेन इन सेक्शन शैल अप्लाई, कि आपने जो चेक प्रेजेंट करना है विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, और जो उसकी वैलिडिटी है विच एवर इज अर्लियर. एंड सेकंड, कि अगर आपका चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो यू हैव टू मेक ए डिमांड नोटिस, उसको डिमांड नोटिस भेजना है इन राइटिंग विद इन 30 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक. एंड अगर उसके बाद जो आपको पेमेंट नहीं मिलती विद इन 15 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस,
So these are some conditions are there regarding section 138 for the offense in case of dishonor of the check. फिर explanation में it's provided for the purpose of this section, debt of other liability means a liability enforceable debt or other liability. तो इस केस में जो अभी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है इन द केस ऑफ दशरथ भाई त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्रा भाई पटेल, ऑनरेबल जज डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने इन दिस केस किया था कि चेक इशू किया था 20 लाख रुपीस का, एंड इन बिटवीन बिफोर क्लियरिंग द चेक, जो जब चेक से क्लियर से पहले उन्होंने पार्ट पेमेंट कर दी थी बोरोवर ने अराउंड 4,09,315 की टू द, उन्होंने पेमेंट कर दी थी जिन्होंने चेक इशू किया था, एंड देन check was presented for 20 lakh without endorsing the part payment, क्योंकि पेमेंट कितनी करनी थी टोटल 20 लाख रुपीस की, एंड 20 लाख रुपीस का चेक इशू किया था, बट they have also paid the amount of 4,09,315 rupees. And in that case, Supreme Court noted that this amount 4,09,350 is not endorsed. पूरा ही चेक प्रेजेंट कर दिया एंड चेक वाज बाउंड. सो इन दिस केस thus Supreme Court said the respondent has not committed any offense under section 138 because this part payments has not endorsed. And Supreme Court said the complainant under section 138 of the Negotiable Act is not sustainable when the check got dishonored after being presented for the full amount, क्योंकि जो part payment है that you have to endorse. And from this case there are some Supreme Court's findings are there which they have written in their judgment. These summarized findings are there. Supreme Court said for the commission of an offense under section 138, the check that is dishonored must represent a legally enforceable debt on the date of maturity और presentation. सो जिस डेट को, जो हमारा पीछे केस था, जिस डेट को मेच्योरिटी थी या प्रेजेंटेशन ऑफ चेक था, at that time what was the legally enforceable debt? That was not 20 lakh rupees. That was 20 lakh minus the part payment. So Supreme Court said, and that date of maturity or the presentation, that must represent a legally enforceable debt, because वो legally enforceable debt है नहीं, because payment कितनी करनी है 20 lakh minus the part payment. So another thing, if the drawer of the check pays a part or whole of the sum between the period when the check is drawn and the when it is encashed upon maturity, then the legally enforceable debt on that date of the maturity would not be the sum represented on the check. तो ये भी हमें अब डिस्कस कर लिया कि अगर इन बिटवीन कि आपने जब चेक इशू किया, ये चेक जब मेच्योरिटी के लिए या रिप्रेजेंट के लिए आपने भेजा, इन बिटवीन कोई आपने पेमेंट कर दी, देन दैट केस लीगली इन्फोर्सेबल डेट क्या है, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी विल नॉट बी द सम रिप्रेजेंट ऑन द चेक. And when a part or whole of the sum represented on the check is paid by the of the check, it must be endorsed on the check as prescribed in the section 56 of the act. The check endorsed with the payment made by the use of negotiable the balance, if any, if the check that is endorsed is dishonored when it's sought to be encashed upon maturity, then the offense under section 138 will be standard acted. So means thereby कि आपने जो चेक इशू किया है और इन बिटवीन आपने कोई पार्ट पेमेंट करी है, तो इफ दैट चेक जो फुल अमाउंट का, अगर वो चेक अगर आपका बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, देन सेक्शन 130 जो आपका डीम टू बी ऑफेंस वुड नॉट बी अट्रैक्टेड. You have to endorse the part payment, and if after that payment, part payment, if that check bounce, then section 138 would be attracted. So in this case जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, he has made the part payment before the check was encashed upon the maturity. So उन्होंने 20 लाख में से 4,05,315 रुपीस पे करे हैं, that's paid before the maturity of the check, and that should be
endorsed by the जिनको हमने चेक पे किया है, then the enforceable, legally enforceable debt is not 20 lakh rupees on the date of maturity because पहले भी आपको पेमेंट मिल गई है. So in this case, first respondent cannot be deemed to have committed an offense under section 138. So this 138 उसके ऊपर applicable नहीं है, कोई deemed to be offense नहीं है. So this is the case जो अभी recently, अभी एक दिन पहले ही ये जजमेंट आई है by the honorable Supreme Court regarding the dishonor of check. So I think this is now clear now. If you have any other query, Nandita ji, you can ask. Yes, sir, it's clear. And thank you so much for such a wonderful presentation, sir. And once again, many, many returns of the day. Thanks to all users to join us. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thanks a lot.